हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन ने हाइड्रोजन एटम के बारे में बेसिकली बोर मॉडल पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने देखा था फ्यू टर्म्स, फ्यू डेफिनेशन, दैट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, excitation as an energy, excitation potential, and their calculation, how we can calculate all those things actually. Let's continue here and we are going to study in this lecture that is about hydrogen spectrum. आपको याद हो तो आपको बताया था beginning में that Rutherford's model failed to explain the hydrogen spectrum. तो अभी पहले थोड़ा सा अपन देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ एक्चुअली में, बट स्टिल आई विल सी जस्ट लिटिल बिट एंड आई विल एक्सप्लेन कि कैसे जो बोर मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर पाया। तो स्पेक्ट्रम आपको अभी समझ में आ गया होगा, पहले भी मैंने बताया था, व्हेन सम लाइक यू कैन से बीम ऑफ लाइट कैरिंग वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ पासेस थ्रू ए प्रिज्म, इट स्प्लिट in the order of wavelength, is it? And on the screen we get splitted light, is it? In the order of wavelength, we call that as a spectrum. तो अगर वो white light का है then we call it simply spectrum of white light. ऐसे ही जो लाइट है या रेडिएशंस हैं या वेव हैं वो अगर एक सोडियम लैंप से क्रिएट किए जा रहे हैं then we call that spectrum of sodium light, is it? And similarly for hydrogen. तो एक्चुअली में जो स्पेक्ट्रम है वो दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अनदर इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। इनका मतलब क्या है ये आपको बताते हैं थोड़ा सा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है एक्चुअली में कि यहाँ पे लाइक लेट्स से वी हैव बीम ऑफ वाइट लाइट और वाइड रेंज ऑफ लाइट, इज इट? हमारे पास लेट्स से बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ बीम इज देयर, इज इट? और यहाँ पे अपने पास एक सैंपल कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो अपन ने इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया, हाइड्रोजन, इज इट? बेसिकली हियर वी आर, सो यू कैन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो आपने हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लेट्स से दिस इज आवर हाइड्रोजन एक्चुअली। तो क्या होगा एक्चुअली व्हेन दिस लाइट इज पासिंग थ्रू दिस हाइड्रोजन, इन दिस केस जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, is it? This is nucleus. तो अगर जो हाइड्रोजन एटम है, लेट्स से इट्स इन ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो वो क्या होगा, इन यहाँ पे जो लाइट आ रही है उसमें क्या है, इट्स वाइड रेंज, बहुत सारी वेवलेंथ है इसमें से। तो कुछ वेवलेंथ को क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके और हायर स्टेट में चला जाता है। ये अभी आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था दैट विच वेवलेंथ विच लाइक रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक पार्टिकुलर इसके इन दोनों जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी का डिफरेंस है, अगर जो फोटोन या यहाँ से जो रेडिएशन आ रहे हैं उनकी एनर्जी एग्जैक्टली उसके बराबर होगी तो वो रेडिएशन, वो वेवलेंथ क्या होगी, एब्जॉर्ब कर ली जाती है एक्चुअली में। तो उसके बाद क्या होगा लाइक, तो आउट ऑफ दिस, is it incident, you can say wide range of wavelength, some of these wavelength will be absorbed and here you will have, is it like this wavelength, and few absorbed wavelength will be missing from here actually. And when these wavelengths are passing through the prism, this light actually passing through the prism, so we get here a spectrum, and out of this the absorbed wavelength lambda will be missing in the spectrum. तो बेसिकली यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी वेवलेंथ यहाँ पर हियर लाइक द स्पेक्ट्रम ऑफ मिसिंग वेवलेंथ, वी कॉल दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली ये अपने पास स्पेक्ट्रम मिलेगा बट यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया है एक सीक्वेंस में कि यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ इंसिडेंट कराई है, उनमें से कुछ वेवलेंथ यहाँ पे मिस कर रही होंगी, तो जो वेवलेंथ यहाँ पे मिस हो रही है उनका अपने पास क्लियरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक सीक्वेंस आ जाएगा दैट विच वेवलेंथ आर नॉट प्रेजेंट हियर। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है वी कॉल दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लियर? ऐसे एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है एक्चुअली, अनदर बी इज कॉल्ड एमिशन। ये जस्ट आपके समझने के लिए बता रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। जो अभी हम बात करेंगे डिटेल में वो इसकी बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, हाइड्रोजन है उसको पहले से एक्साइट किया जाता है, राइट? maybe like by heating and by is it passing or exposing it to some different radiations, is it? So initially hydrogen is excited,
initially hydrogen sample is in excited state, राइट और ये आप समझ सकते हो एक्चुअली में जो हाइड्रोजन लैंप थे तो सोडियम लैंप में भी क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, वो कोई सोडियम को कंटिन्यूसली एक्साइट करता है एंड देन व्हेन सोडियम एक्साइटेड स्टेट वापस डीएक्साइट होता है देन इट इमिट्स सम रेडिएशन। सो एग्जैक्टली सेम मैनर में तो मतलब पहले इनिशियली क्या होता है कि हाइड्रोजन सैंपल इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो मान के चलते हैं कि ये अपने पास कुछ हाइड्रोजन सैंपल है एंड विच इज इन एक्साइटेड स्टेट, और ये जो एक्साइटेड स्टेट होता है हाइड्रोजन, तो वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकता, इट स्टे देयर फॉर सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और छोटे से टाइम के लिए ड्यूरेशन के लिए रुकता है, इट स्टे देयर, आफ्टर दैट इट बाउंस बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा, आप समझ सकते हो कि अभी पहले इस केस में क्या था, ग्राउंड से जा रहा है हायर स्टेट में। इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम व्हाट विल हैपन हियर, एक्चुअली इनिशियली योर हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, तो मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए रहेगा नहीं, इट विल इमिट सम रेडिएशन एंड बाउंस बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो यहां से जब यहां आएगा तो आप समझ सकते हो कि इनकी एनर्जी का कुछ डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस इन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लूज करनी होगी, और लूज करता भी है तो वो जो एनर्जी है वो एक रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आएगी, और वही अलग अलग क्योंकि कॉम्बिनेशन होंगे, वो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास बहुत सारी वेवलेंथ हमें मिलती हैं, और उसी को इज इट, सो दिस रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एक्साइटेड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, these passes through a prism and now these are plotted, and here this is called hydrogen spectrum, or you can say emission spectrum of hydrogen. So this is your emission spectrum. अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं जो बोर मॉडल में अपन को लाइक ज़रूरत है और हम लाइक स्टडी करते हैं। So let's see that. Okay, so now we are particularly going to discuss a little bit more about hydrogen spectrum, that too specifically for emission spectrum. तो स्पेक्ट्रम क्या है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी हाइड्रोजन एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इट डजेंट स्टे देयर इन एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्गर टाइम, इट फाइनली jump back to the ground state by emitting a radiation, that energy of radiation is equal to the difference in energy of these orbits, is it? तो यहाँ से जो हमें रेडिएशन मिल रहा है वो सभी रेडिएशन को हम प्लॉट करते हैं and we get emission spectrum. तो this is about actually, so you can say here the electron in excited state stay only for very small duration of time, and finally it jump to lower energy state by emitting a radiation having energy equal to the difference in energy of higher and lower state, ठीक है ना। तो इतनी जो डिफरेंस इन एनर्जी है उतनी एनर्जी का फोटोन या एक रेडिएशन एमिट करके फाइनल इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, एंड दिस वी कॉल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो वी कैन गेट एक्चुअली इसके लिए अपन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मैं ये मान रहा हूं जैसे दिस इज आवर न्यूक्लियस, लेट्स से दिस इज एन इनिशियल
finally your electron is jumping from here to there, and this is n final. Is it? Don't go for it initial third and final it's first. It can be any. I am just taking general case. तो n initial से n final में अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो आप देख सकते हो एनर्जी, is it? Let an electron jump from initial Ni level to final NF एनर्जी लेवल. तो उस सिचुएशन में इनिशियल एनर्जी अपन क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू माइनस, यू कैन राइट हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 डिवाइडेड बाई Ni स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वी नो दिस एनर्जी ऑलरेडी. व्हाट विल बी द फाइनल एनर्जी? ई फाइनल. और आप जनरल टर्म्स में अगर किसी के लिए भी लिख रहे हो, हालांकि हम ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए ही लिख रहे हैं, तो इसको आप माइनस आर एच सी बाई एन आई स्क्वायर भी लिख सकते हो. इज इट? सो दिस इज सेम थिंग टू फाइनल. सो हियर ऑलरेडी एन एफ. सो आई कैन राइट ई फाइनल विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 divided by n final square electron volt, or you can write minus RCH divided by NF square electron volt. ठीक है. अब देखो दूसरी चीज, डेफिनेटली यहां बोल सकते हैं कि इसकी फाइनल एनर्जी विल बी स्मॉलर. यू कैन राइट E final will be always less than E initial. तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, तो वो क्या लिख सकते हो आप? डेल्टा E इज इक्वल टू E इनिशियल एनर्जी इज हायर, E इनिशियल माइनस E फाइनल. क्लियर? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू माइनस RCH डिवाइडेड बाई NI स्क्वायर माइनस RCH डिवाइडेड बाई NF स्क्वायर. जिसको RCH divided by 1 by NF square minus 1 by NI square. This is delta E. और ये जो एनर्जी है वो कैसे निकलेगी? This energy, is it? This energy will come out as a radiation of frequency nu and wavelength lambda. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू आर सी एच 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर. दिस इज इट. आई कैन इरेज दिस पार्ट. आई होप यू आर गेटिंग कि क्या हो रही है ये चीज़ें, क्यों इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कहाँ से एनर्जी आ रही है, कितनी आ रही है. दैट शुड बी क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ से देखो, एक तो न्यू आप लिख सकते हो इमिटेड. दिस इज इक्वल टू व्हाट? आर सी 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर. अगर आपको पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, दिस वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 1 बाई लैम्डा. तो यहां से एच सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आर. दैट विल बी इक्वल टू आर. सो दिस इज आर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बार, एंड दिस इज कॉल्ड वेव नंबर. तो ये हो जाता है. Now the point was that this emission spectrum for hydrogen was studied by different scientists, and they formed some series of this emission spectrum. So we studied that as like different series. Let's see what are those series, because यहाँ पे जो possibility थी ना, let me just erase it. अब ये सीरीज कौन सी बन रही थी वो भी आपको बताते हैं.
तो सीरीज जो बन रही थी यहाँ पे वो ये थी एक्चुअली, लेट्स से दिस इज तो ये हो गया n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो यहाँ पे जो डिफरेंट सीरीज कौन कौन सी बन रही थी, सीरीज में इसमें ये थी कि एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सब जगह से पूरा फाइनल से एक इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन एमिट करके इट्स जंपिंग टू इनिशियली ग्राउंड स्टेट, सो फ्रॉम देयर मीन्स ये लास्ट मैंने 6 लिया है, 7 8 9 भी हो सकता है, इज इट? सो इट्स इन एवरी सिचुएशन इट्स जंपिंग फाइनली टू द ग्राउंड स्टेट, सो 6 to 5 to 1 4 to 1 3 to 1 and 2 to 1, एक ये सिचुएशन हो सकती है। क्लियर ना? ऐसे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वेयर ऑल रेडिएशंस और इलेक्ट्रॉन आर फाइनली जंपिंग, सो हियर they are jumping to second state, again second, means 6 to second, 5 to second, 4 to second and 3 to second. Clear? तो ये सीरीज ये थी इन लाइक सीरीज सॉरी 3 to second, right? So this is studied by one scientist, so we name this is basically studied by Lyman was scientist name, and we call this is Lyman series. This is Balmer series, and similarly when all are jumping back to finally this third, this is Paston, and similarly if they are jumping to this fourth, then it's bracket. There were actually even more, let me draw it. तो मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। सो इन दिस सिचुएशन इट्स जंपिंग फ्रॉम 7 to 1, दिस इज n इक्वल टू 7, तो यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा ये 7 to 2, this is 7 to 3 and this is 7 to 4. Next can be actually 7 to 5 and 6 to 5, right? And even last can be 6, is it? So this is called Lyman series, Balmer series, bracket Lyman Balmer bracket Paston P-Fund, is it? Not considering this. Clear? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, when the final, is it, electron is jumping finally, is it, or you will say directly from any excited state to the ground state, the series of wavelength, series of all those radiations, we call that as Lyman series, is it? So let me just I hope this part is clear. So here हम इसको नाम देते हैं, this is Lyman series, this is called Balmer series, Paston bracket, this is P-Fund. Let me just check the names. So this is actually, ये क्या है ultimately, this is hydrogen spectrum or you can say emission hydrogen spectrum. But यही जो series थी, series यहाँ पे क्या बन रही है कि when like your electron is jumping from any excited state to ground state directly, then we have like different series of wavelength, we call this is Lyman series. When it is jumping to first excited state, means second principal quantum number orbit, then it's called the Balmer series. In this case we have like wavelength, so here it's like UV, all these wavelength lies in UV region.
Balmer series lies in visible region and all these three lies in infrared region. So let me write you the expression exactly for all this. तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हर एक के लिए वैलिड है फॉर एवरी सीरीज. इज इट? नाउ वी कैन राइट एक्चुअली फॉर individual. So what is exactly Lyman series? In this situation, when electron directly jump to ground state from any excited state, the series of wavelength we call Lyman series. तो इस सिचुएशन में जो वेवलेंथ हो जाएगी वो क्या लिखेंगे? 1 by lambda. Here definitely n initial can be anything n, but your n final will be equal to what? 1, right? So in this case n initial क्या हो सकता है? Like I will say n final equal to always 1, n initial will be equal to what? It's 2, 3, 4, 5, so on. So in this case, your lambda for Lyman series is given by r, and this is 1 by n final. N final is equal to 1 square minus 1 by n square. So this is Lyman series. It belongs to ultraviolet region. Of electromagnetic radiation. Next is series, Balmer series. In this case, you can say the electron directly jump to first excited state from higher excited state. तो यहाँ पे फाइनली कहाँ जंप कर रहा है? n is equal to, so you can write n final is equal to what? 2. n initial it can be like 2 से तो नहीं जंप करेगा 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, so on. तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं? 1 by lambda is equal to, मैं थोड़ी सी एक और चीज इसमें बताऊंगा अभी आपको. Okay, so in general terms I can write this is 1 r and this is 1 by n final will be what? 2 square minus 1 by n square, where n is equal to 3, 4, 5, 6, 7, so on. Is it? तो ये क्या हो गई? Balmer series. It belongs to basically visible region. ये सभी वेवलेंथ विजिबल रीजन में आती हैं. ओके, सो दिस इज, आप इसको एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं फॉर लाइक इज इट सीरीज एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. आई कैन ड्रॉ इट इन दैट वे आल्सो, और लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट. Exactly in same manner I can write for Paschen bracket and P fund also. So in this case Paschen series n final will be always equal to 3 and n initial is 4, 5, 6, so on. तो इसके लिए lambda क्या हो जाएगा? 1 by lambda is equal to r and 1 by 3 square minus 1 by n square, where n is equal to that. This, it belongs to infrared region. And similarly Paschen, next is bracket. So here your final n final will be equal to 4, n initial is equal to 5, 6, 7 and so on. Is it? So bracket you can see n 4. In this case 1 by lambda is equal to r. R is Rydberg constant. 1 by 4 square minus 1 by n square, or you can say n initial square. Again this also belongs to infrared region. And the last one was P fund. तो यहाँ पे अपने पास आता है n initial final is equal to 5, n initial 6, 7, 8,
so on. And here lambda for p fund is given by r Rydberg constant 5 square minus n initial square, and these are also, this also again belongs to infrared region of EM waves. तो ये तो थी आपकी सीरीज एक्चुअली, जहाँ पे ये हम एग्जैक्टली वेवलेंथ निकाल सकते हैं इनका। हाँ, इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और आपको पूछी जाती हैं, वो मैं थोड़ा आपको, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट पार्ट। ओके, सो सी हियर वी हैव एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन like orbits. Okay, ये आपको familiar है, you are must be like first energy ground state minus 13.6 electron volt minus 3.4 and so on, right? अब इसमें क्या हो रहा है कि जब किसी भी ऑर्बिट से फाइनली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, देन ऑल दोज सीरीज ऑफ वेवलेंथ वी कॉल लाइमन सीरीज। जंपिंग टू सेकंड्स like n is equal to 2 or first accelerated state we call Balmer series, so on, Paschen, bracket and p fund. Now see here what is happening actually. तो यहाँ पे पूछा जाता है आपको मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज, इज इट? आपको पूछ लिया जा सकता है जैसे ब्रैकेट सीरीज का मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ निकालिए। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? मीन्स व्हेन द एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम। कैन आई से? बिकॉज यू कैन सी हियर डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा आप लिख सकते हो एच सी बाय डेल्टा ई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये एच सी की वैल्यू जब अगर अपन प्रॉपरली सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा अपना आ जाता है 12,420 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये अपने को एंगस्ट्रम में सीधा सीधा मिल जाता है, राइट? और दूसरा एक रिलेशन अभी अपन ने यहाँ पे देखा ही था, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? It's R Rydberg constant 1 by n final square minus 1 by n initial square. तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जब एनर्जी डिफरेंस दिस विल बी मिनिमम, योर लैम्डा विल बी मैक्सिमम, इज इट? सो हियर आई कैन राइट व्हेन डेल्टा E minimum implies lambda is maximum. Clear? And similarly, you can write delta E is max implies lambda is minimum. Is it clear? क्योंकि ये चीज़ें आपको कभी कभी पूछ ली जाती हैं, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं लाइमन सीरीज के लिए पूछता हूँ आपको व्हाट इज द और फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। कैन यू जस्ट पॉइंट आउट दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू विच ट्रांजिशन, राइट? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम फॉर दिस। लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम देखो 2 से 1 आएगा तो कुछ ये एनर्जी है, दिस माइनस दिस दैट इज 10.2। अगर ये 3 से 1 आएगा तो डेफिनेटली 10.2 से बड़ा है। 4 से 1 आएगा और भी बड़ा है। 5 से 1 आएगा और भी बड़ा है। 6 से 1 आएगा और भी बड़ा है। सो व्हाट विल बी द लैम्डा मैक्स? लैम्डा मैक्स विल बी करस्पॉन्डिंग टू एन इनिशियल 2 एन फाइनल इक्वल टू 1। ये वैल्यू आप इसमें रख देते हैं, यू विल गेट द लैम्डा मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज। ऐसे ही मैं बोलता हूँ लैम्डा मिनिमम, देन व्हाट विल बी लैम्डा मिनिमम करस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज? मिनिमम लैम्डा मतलब मैक्सिमम व्हाट? मैक्सिमम एनर्जी। एंड मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आएगी? फाइनली तो यहीं पे लैंड करना है इलेक्ट्रॉन को। इट कैन कम फ्रॉम वेयर? तो यहाँ पे 7 नहीं, 7 से ऊपर 8, 9, 10, which one? We consider infinity. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n initial equal to infinity to n final equal to 1. For this transition, your lambda will be minimum and that will correspond to Lyman series. तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, अगर मैं पास्चन सीरीज के लिए बात करता हूँ तो what will be lambda max? लैम्डा मैक्स का मतलब क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। मिनिमम एनर्जी क्या होगा? जब ये क्या है? 4th है तो 4th के जस्ट नेक्स्ट, मतलब कि कोई भी इसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव में आएगा वो मिनिमम एनर्जी बेसिकली आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्सिमम आएगा। तो लैम्डा मैक्स विल बी व्हाट? एन इनिशियल इक्वल टू 5 एंड फाइनल इक्वल टू 4। जब 5 से 4 में जंप करेगा देन एनर्जी विल बी मिनिमम एंड योर लैम्डा विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली हियर यू कैन राइट लैम्डा मिनिमम विल बी फॉर एन इनिशियल। एन इनिशियल यहाँ पर भी कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी टू एन फाइनल इज इक्वल टू 4।
तो ये आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको किसी भी सीरीज के लिए पूछा जाता है देन यू कैन फाइंड इट्स एक्चुअली मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ, करेक्ट। सो वन इज दिस पॉइंट, ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि मतलब एनर्जी है एक्चुअली में दीज ट्रांजिशंस, इज इट jumping of electron from any initial state to final state that actually belongs to one energy difference। और यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए सिंपल सा कि जहाँ एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम लैम्डा इज मैक्सिमम, क्लियर। सो दिस इज अबाउट, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यही ट्रांजिशन के लिए एग्जैक्टली जो वेवलेंथ हम निकालते हैं इनके करस्पॉन्डिंग ऑल दिस वेवलेंथ एग्जैक्टली कम्स, यहाँ से जो सभी वेवलेंथ है वो वही वेवलेंथ आ जाती हैं जो अपने आपको लास्ट लेक्चर में आई थिंक एक लेक्चर में पीछे बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि जिसको रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था। तो उसमें जो वेवलेंथ आ रही थी आपकी 1000 एंगस्ट्रॉम, 1066 एंगस्ट्रॉम, इज इट ऑल दोज 1127 समथिंग एंड 1333 एंगस्ट्रॉम, और वो सभी वेवलेंथ थी, ऑल दोज वेवलेंथ लाइज हेयर इन्हीं सब में। तो ये इस तरह से आपका जो बोर मॉडल था दैट वाज क्लियरली एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से एक और ये लाइक इट वाज वन मोर सक्सेस फॉर एक्चुअली बोर मॉडल। ओके, सो लेट्स सी मोर केसेस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। One more small point actually here. So you know that actually Balmer series lies in visible region, right? I already told. Now in this case actually what will be the like line or spectrum radiation corresponding to lambda minimum, is it? तो यहाँ पे lambda minimum किसके corresponding हो? lambda minimum मतलब maximum energy and that will be like this from infinity to here, and lambda maximum basically here lambda maximum will be for this. So you can write for this lambda max will be for n initial, which one? N initial 4 3 to n final is equal to 2. This will be maximum. So here we define two more in Balmer series, right? Lies in invisible region. The wavelength or the line corresponding to, is it? To maximum wavelength or minimum frequency is called H alpha, means H alpha will be for what? So you can write n initial equal to 3 to n final equal to 2 transition. For this it will be called your H alpha line. Here you will have lambda max or new minimum, right? Similarly the next line is called H बीटा लाइन। तो कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाएगा कि H अल्फा H बीटा लाइन की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालो, तो H बीटा किसके लिए हो जाएगा? फॉर n इनिशियल इक्वल टू 4 टू n फाइनल इज इक्वल टू 2 ट्रांजिशन। हेयर दिस विल बी लाइक यू कॉल H बीटा लाइन। तो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको आप समझ सकते हो कि बोर मॉडल से काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन किया जा सका और हम इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये एग्जैक्टली क्या क्या है, कौन सी वेवलेंथ वगैरह वगैरह। यू कैन एक्चुअली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, यू कैन कैलकुलेट ऑल दीज लैम्डा वेवलेंथ मैक्सिमम मिनिमम एंड ऑल दैट। वी विल सॉल्व फ्यू केसेस इन प्रॉब्लम। सो लेट्स सी सम एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। Okay, so let's see one application of that concept. Here we have problem given for bracket series of line produced are like lines are produced when electron excited to high energy level make a transition to n is equal to 4। तो यहाँ पे आपको दे रखा है final n is equal to 4, तो वो जो सीरीज होगा where transition are like from higher energy state to finally 4 all lies in bracket series। तो ये तो कंडीशन आपको दे रखी है। अब आपको पूछा गया है द डिटरमाइन द
longest wavelength in this series. Okay, so lambda max actually, right? और ये आपको पता होगा ये किसके लिए होता है, next high level to this fourth basically. So you can write n initial is equal to 5 to n final is equal to 4. Definitely I can say that energy will be minimum and lambda will be maximum. So I can write here lambda max for this series will be r n, that is 4 square minus this is n initial, that is 5 square. क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. एंड यहाँ पे r इज रेडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 1.097 into 10⁻⁷ meter inverse. Substituting all these values, so we are getting lambda, this is 1.097 10⁻⁷ 1/16 minus 1/25. And simplifying and solving this, we are getting lambda max coming out to be 4051 angstrom. Is it? So this is a wavelength corresponding to, or you can say the maximum wavelength corresponding to this transition. Next it is asking the wavelength that correspond to the transition from 6 to 4. तो ये भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं. So lambda for n initial 6 to n final 4. तो इसके लिए क्या लिखेंगे, lambda is equal to again r, this will be 4 square minus 1/6 square, and lambda ये 1.097 into 10⁻⁷ 1/16 minus 1/36. इसको भी अपन exactly solve कर सकते हैं ऐसे ही. And finally we will get, just one second here, it will be actually nanometer, not angstrom. And similarly solving this, we are getting lambda is coming out to be 2630 nanometer for this also. Next C part is identify the spectral region in which these lines. तो ये आपको पहले ही बता चुके थे कि ब्रैकेट सीरीज किस में लाई करता है, infrared region, is it? So this lies in infrared region. Bracket series lies in infrared region. So you can see this is simple straightforward problem. तो आपको ऐसे आगे किसी में भी पूछा जा रहा है maximum wavelength, minimum wavelength, this series का उस series का, any transition and like which region, that you should be knowing actually. And it's simple, calculation is there, you just need to simplify, you need to calculate that, you will easily get the answer. So okay, so here we have another application. The problem is the Balmer series for the hydrogen atom correspond to electron transition that terminate in the state of quantum number n is equal to 2. तो यहाँ पे देखा है Balmer series के बारे में बात की जा रही है, Balmer series, and it's also given that finally it's terminating and like all transitions are terminating to n is equal to 2. So this is your final actually, and final is always equal to 2. अब इस स्टेट के लिए आपको पूछा गया है फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. तो आप समझ सकते हैं एक्चुअली में यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4. तो बार्मर सीरीज में क्या होता है, ऑल ट्रांजिशंस आर फ्रॉम हायर स्टेट टू n इज इक्वल टू 2. और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 and this -0.54 and so on, राइट. तो ये है बार्मर सीरीज. अब इसके देखो पूछा क्या गया है ए पार्ट में, अभी आपको बताए थे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड इन इट्स एंड इट्स एनर्जी. तो यहाँ पे देख सकते हो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जहां पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम, इज इट. सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस लैम्डा मैक्स implies for which transition n initial is equal to 3 to n final is equal to 2. क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो 3 से 2 जो ये ट्रांजिशन होगा, for this lambda will be maximum because delta E will be minimum. तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, I can write again same this formula r into 1 by this is what 2 square minus 1 by 3 square, and this you can simplify actually. This is 36 and 5 r by 36 and lambda is equal to
this you can substitute 36 divided by 5 into 1.097 into 10 raised to power 7, and solving we are getting this value is 556. Just one second, it's 656 actually, 656.3 nanometer. तो ये आ जाती है आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू बार्मा सीरीज. ओके, नेक्स्ट इट इज आस्किंग अबाउट इट्स एनर्जी आल्सो. तो देखो एनर्जी निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं. एक तो आप ये क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2, तो एक तो इनका एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा एक्चुअली. सो एनर्जी you can write E3 minus E2, that is equal to minus 1.51 minus plus 3.4, that comes out to be 1.89 electron volt. One a way is this actually, right? दूसरा तरीका अपन को पास मालूम है actually, we know this relation delta E is equal to 12,420 divided by lambda in angstrom. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है. तो यहाँ पर भी अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे 420 एंड लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा. दिस इज 656.3 nanometer. सो वी कैन एक्चुअली इन एंगस्ट्रॉम we can multiply it by, so this is equal divided by 656.3 angstrom, and simplifying this you will get delta E is equal to again 1.89 electron volt. So this is another way actually. So this is about A part. B part में it's talking about the shortest wavelength photon emitted in the Balmer series. तो ये अभी आपको मालूम है. So lambda minimum that will be corresponding to n is equal to initial infinity to n final is equal to 2. तो ये क्या हो जाएगा, 1 by lambda r, this is 2 square minus infinity, and this comes out to 1 by lambda is equal to r by 4, and lambda is equal to 4 by r 1.097 into 10 raised to power 7. तो इसको सॉल्व करके अपने पास लाइक वी गेट द आंसर एक्चुअली दैट कम्स आउट टू बी 364.6 nanometer. So lambda minimum is equal to 364.6 nanometer for Balmer series. So this is your another problem, and that too is straightforward, easy, right? Okay, so the next we are going to talk about is the effect of nucleus motion on energy of atom. Here actually the point is that इससे पहले जो अपन ने चीज़ें देखी हैं बोर मॉडल, in that case we considered that nucleus is at rest and electron is revolving around the nucleus, and we did all the calculation based on that. और actually में जब normal situation में when mass of electron is very small, mass of the nucleus is very large, in that situation this assumption, this calculation, everything fit perfectly fine. But in some cases, or like that basically normally asked in some problems actually, when we have a system where the mass of two particle, maybe let's say mass of the electron and mass of the nucleus is almost comparable. ये similar situation आपने gravitation chapter में भी देखा होगा when we talk about अर्थ और लाइक सोलर सिस्टम एक्चुअली. तो जब अर्थ का मास सन के मास के कंपैरिजन में अपन बहुत छोटा कंसीडर कर लेते हैं, देन वी डू द नॉर्मल कैलकुलेशन, एंड देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड बाइनरी स्टार सिस्टम व्हेन द मासेस ऑफ द टू प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल. देयर वी नीड टू यूज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास फॉर बेटर कैलकुलेशन फॉर बेटर रिजल्ट. सो एग्जैक्टली आई एम बोरोइंग द सेम कंसेप्ट हियर एक्चुअली, कि जब आपका न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का मास इट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल, इन दैट केस द सिचुएशन दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर seems little bit deviating, little bit actually wrong. So for the better purpose, for getting better result, we need to here consider the motion of nucleus. So now we are going to see कि अगर nucleus के motion को भी हम consider करते हैं, then how the radius is it of electron
its speed of electron, energy of electron will change, and how we will calculate that, how we will consider the effect of motion of nucleus in such cases. So first thing is that when the mass of nucleus and electron is comparable, उस सिचुएशन में in that case we need to consider this. इससे पहले वाले केस में when mass of electron it's like very small compared to mass of neutron or nucleus, then we just apply normal case and there things comes actually exactly same. तो इस सिचुएशन में होता क्या है actually, let's say this is, here we have nucleus and its mass is mn, and here we have electron and its mass is, let's say, me, and these masses are comparable. So here I can write, so let's say this is the center of mass where this distance can be taken as r1 and let's say this distance is r2. clear? तो center of mass, so इस situation में जब दोनों का mass comparable है, at that point of time both actually revolve in separate circular orbits about center of mass, is it? So in this case both nucleus and electron revolve around center of mass in different circular orbits. So in this situation the motion is actually like this. It's not exactly circular. यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं. Let's assume this is just circular path. So at any situation, let's say this is your nucleus, this is electron, this is nucleus, so Mn, this is Me, and this is their center of mass. तो ये जो है वो इस सर्कल में रोटेट करेगा and simultaneously they will be rotating like this. So electron is rotating in this circle. So electron is rotating in a circle of radius r2 and this is rotating in a circle of radius r1. Where r1, r2 from the concept of center of mass we can write actually. So r1 will be equal to me into r. Let's say the separation between these two is r divided by me plus mn. Clear? And similarly r2 will be mn into r divided by me plus mn. So in such cases actually when we need to consider the effect of motion of nucleus also, तो इस तरह की सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, instead of simply considering the mass of electron as me, we replace this system with a reduced mass concept. Is it? Replaced the system with reduced mass concept. उस सिचुएशन में reduced mass is equal to mn me divided by mn plus me. reduced mass का मतलब ये होता है कि एक इफेक्टिव मास जहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियस फिर से रेस्ट में है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है with not the mass of mn but this reduced mass. So in this case, by considering the effect of motion of nucleus here, this system is replaced by actually this system where we have, this is nucleus with JE, let's say some charge, here also the charge is some JE, and this is at rest, and now electron is moving here with mass equal to reduced mass. So this is electron.
अभी ये सिंपल वही सिस्टम हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है एंड विद द रेडियस सम आर एन, इज इट? तो ये सेम सिस्टम हो जाता है बेसिकली, बस यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूक्लियस के मोशन का इफेक्ट हमें कंसिडर करना होता है, उस सिचुएशन में आप ऐसे मान लो कि न्यूक्लियस सेम ही है अभी भी रेस्ट में, बस इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो एक इफेक्टिव मास से रिप्लेस्ड हो जाता है, एंड दैट इफेक्टिव मास इज डिफाइंड दिस वे, जिसको हम एक्चुअली में बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो अभी अपन देखते हैं कि इस सिस्टम के लिए ये भी अब एक नया बोर मॉडल हो जाएगा, और इस सिस्टम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं बोर मॉडल के, दोज थिंग्स आर एक्चुअली लाइक जो इनिशियली अपन फॉर्मूले होते हैं उनको मॉडिफाई कर देते हैं, वेयर मास वेरेवर द मास इज कमिंग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मास विल बी रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास, इज इट? सो फॉर सच सिस्टम, फॉर दिस सिस्टम, Bohr model become valid by replacing mass of electron with reduced mass. Right? तो अभी देखो जैसे अपन देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या आता है, वेलोसिटी इट्स इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 epsilon naught h into z by n. So in this situation, this is the radius of nth orbit for Bohr model. You can see here it's independent of mass. So जो nth orbit में radius like velocity थी, normal Bohr model में exactly same velocity will be here of electron in nth orbit. So it's independent of mass, so velocity will remain same for nth orbit. Clear? ऐसे ही अब अगर अपन बाकी चीज़ों पर इसका इफेक्ट देखते हैं, so in this case for radius, is it radius, तो बोर मॉडल नॉर्मल सिचुएशन में अपन को मालूम है रेडियस इज गिवन बाय आर एन इज इक्वल टू व्हाट, इट्स एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये नॉर्मल रेडियस होता है। विद दिस, इज इट, विद इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन, उस सिचुएशन में जो आर एन प्राइम आप बोल सकते हो, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई ई स्क्वायर, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाई मास विल बी रिप्लेस्ड बाई mu e, that is you can say reduced mass of electron multiplied by n square by z. तो ये हो जाता है अपना रेडियस। क्लियर? reduced मास यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, so this is epsilon naught h square into n square divided by pi e square into z, और reduced मास क्या हो जाएगा, mass of electron into mass of nucleus, mass of electron plus mass of nucleus, this right? हाँ, अब इसमें देखो अपन क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। सो आर एन प्राइम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m mass of electron into mass of electron divided by z into mu. मैंने mass of electron multiply divide कर दिया. Now you can see actually this is exactly same like initial Rn, is it? तो Rn prime you can write this is equal to Rn into mass of electron divided by mu. तो अब भी आप लिख सकते हैं Rn prime is equal to, ये रेडियस क्या होता था basically, this you can write 0.529 into this n square by z multiplied by mass of electron divided by mu.
So this is the effect of motion of nucleus on the radius. In exactly same manner I can calculate the effect on energy. So exactly in same manner we can calculate. So energy in normal case I can write En is equal to m e power 4 divided by 8 epsilon naught square h square into z square by n square. Right, this is the energy with the effect of mass nucleus motion with of motion of न्यूक्लियस. इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे अपन, ई एन प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, म्यू ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एंड वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास. यहाँ पर भी मैं एग्जैक्टली सेम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, and then I can write this quantity is equal to normal energy. So you can write En prime is equal to En into this will become your mu divided by mass of electron. और इसको आप लिख सकते हो basically this me mass of electron here e power 4 divided by 8 epsilon naught square h square into z square by n square multiplied by mu divided by mass of electron. This value we know actually, so this En you can write total energy negative होता है वो उसके लिए minus 13.6 into z square by n square multiplied by mu by me. This is the energy of electron in nth orbit. In this case when effect of motion of nucleus is considered. So I think there should not be any problem even when the case we are discussing is having the effect of motion of nucleus also. Simple सी चीज़ है, आपको करना क्या है, नॉर्मल जो अपने पास बोर और लाइक एटम के मॉडल के फॉर्मूले हैं फॉर रेडियस, वेलोसिटी, करंट, एवरी फार्मूला एक्चुअली, wherever there is mass of electron is there, just replace that mass by reduced mass and same formula will be valid, is it? And in any case if there is, let's say, no mass term, is it, in the formula, that quantity that will remain exactly same when we are considering the motion of nucleus and when we are not considering the motion of nucleus. So this is about effect of nucleus motion on energy of atom. I hope it's clear with everyone, right? Okay, so this is all about this lecture. Let's continue from here onward in the next class. Thank you so much.